In this video, I'll be explaining you the chapter Adventure of Toto written by Ruskin Bond further. So let's start from where we have left this topic in the previous video. So let's start reading the context first. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet to toys and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" So, to get his own back means is a idiom. ये एक मुहावरा है इंग्लिश में और इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज, बदला लेना इसका मतलब होता है. क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है उसने मंकी को डॉग बोलकर उससे 3 रुपीज़ ले लिया. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 3 रुपीज़ इज़ अ वेरी बिग सम. सो he was very angry, and to take revenge from the ticket collector, what he did, he took out a tortoise, his pet, from his pocket, and he asked if he was supposed to buy a ticket for it too. तो उसने उसको बहुत गुस्से में पूछा कि क्या मैं इसके लिए भी टिकट खरीदना मुझे ज़रूरी पड़ेगा, सिंस आप सारे एनिमल्स के लिए टिकट खरीदने को बोल रहे हैं. सो the ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it's not a dog." So, prodded means pushed. So, what he did, the ticket collector took a close look at the tortoise, pushed it slightly, he prodded it slightly, and announced that grandfather was not required to buy a ticket for it, as it did not fall in the category of a dog. ठीक है, तो उसने क्या बोला कि टॉयज़ के लिए उसको टिकट बाय करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये कैटेगरी ऑफ डॉग में नहीं आता है. और पर टिकट कलेक्टर को क्योंकि उससे पैसे लेने थे, इसलिए उसने मंकी को किस में डाल दिया, इन अ कैटेगरी ऑफ डॉग. So for this, the grandfather was very angry at him. Okay. Let's read further. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. So, stable is what? Building set apart and adapted for keeping horses. तो horses को जहाँ पे रखते हैं उसके home को बोलते हैं stable. What is the meaning of halter? Halter means a strap or loop placed around the head of a horse or other animal. तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे हॉर्स कार्ट होते हैं उनके ऊपर हमने हॉल्टर लगाया होता है, उनके सर पे कुछ लगा होता है, कुछ लूप जैसा कुछ लगा होता है, तो उसको हम हॉल्टर बोलते हैं. ओके, इट इज़ यूज फॉर लीडिंग और टेथरिंग इट. उनको जो कंट्रोल करने के लिए, उनको लीड करवाने के लिए वो हॉर्स के लगाया जाता है, हॉर्स, donkey इन सब पे. So this paragraph means that the writer's grandmother finally came to know of Toto's presence in the house. तो finally उनको टोटो के बारे में पता चल गया. She allotted him space in the stable along with the family donkey Nana. So donkey की जो फैमिली, डोंकी का नाम था नैना, तो जो डोंकी की जो फैमिली थी उसके साथ उन्होंने टोटो को भी उस स्टेबल में जगह दे दी. On the first night in the stable, grandfather visited Toto. He found Nana restless, pulling its rope in order to stay away from the heap of hay. So, what happened that जो first night थी स्टेबल पे टोटो की, तो grandfather उसको एक ऐसे लुक ऐसी देखने गए कि उसको क्या वो कंफर्टेबल है कि नहीं है उनके साथ. So what he found? Nana restless. So उसने उतना परेशान कर दिया था डोंकी नाना को कि he was becoming restless and he was pulling his rope.
he was pulling its rope in order to stay away from the heap of hay. So he want to stay away from him. Okay, so let's come to the next line. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. So haunches means back, across her back. So what happened? Grandfather hit Nana on the back in order to stop it. So because it was becoming very restless, Nana was becoming very restless, and he was just pulling his halter out of his head. So what grandfather did? He just hit Nana on the back in order to stop all these activities. Nana jumped with a jerk and Toto was dragged along with her. So what happened? He jumped back, जहाँ पे भी वो रहता था उसको वहाँ पे जंप किया उसने, और टोटो को ड्रैग किया गया दोनों को साथ में रहने के लिए, कि दोनों को साथ में ही रखना है. बट दे वर नेवर फ्रेंड्स, दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स. ओके, सो नेक्स्ट paragraph means, let's read it first. A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath. First one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. So, what this paragraph means, in the winter season, Toto enjoyed having a bath with warm water. So he would pretend to be selfish, and before starting his bath, he would check the temperature of the water. So वो pretend करता था कि वो बहुत selfish है. Pretend मतलब ऐसे दिखाना कि वो बहुत selfish है, और नहाने से पहले वो उसका temperature check करता था. कैसे करता था? He would copy the writer and stepped into the tub 1 foot at time. So वो writer को copy करता था. कैसे? टेम्परेचर चेक करने के लिए वो टब में सिर्फ एक पैर रखता था और फिर उसके बाद दूसरा पैर रखता था, जस्ट टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. फाइनली ही वुड सिट इन द वाटर विद हिज फेस आउट ऑफ इट. फाइनली वो उस टब पे बैठता था विद टब फिल्ड विद वार्म वाटर, और उसका फेस जो होता था वो बाहर होता था टब के. देन ही वुड रब हिमसेल्फ विद सोप. देन ही यूज्ड टू रब हिमसेल्फ विद द सोप. When the water became cold, he would run out of it to the stove in the kitchen in order to dry himself. तो जैसे ही वाटर ठंडा हो जाता था वो उससे बाहर निकल जाता था और भागता था किस तरफ? किचन स्टोव की तरफ. स्टोव कुछ चूल्हे को बोलते हैं जिसमें खाना बनता है. तो वहाँ पे जो किचन के स्टोव पे जो फायर चल रही होती थी वहाँ भागता था इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, कि जल्दी से वो ठंड के टाइम में उसको गर्माहट मिलके वो सूख जाए पानी से. Toto got annoyed if he was laughed upon. He would get hurt and then refuse to take bath. और इस पूरे प्रोसेस में अगर ये सारी एक्टिविटीज़ देखकर कोई भी टोटो पर हंस देता था, कोई भी उसका मजाक उड़ा देता था, तो वो हर्ट हो जाता था और वो उस टाइम रिफ्यूज़ कर देता था कि वो नहाएगा ही नहीं. The writer recollects an incident when Toto had almost boiled himself. So एक इंसिडेंट राइटर ने के मन में आया, उसने रिकलेक्ट किया अपने माइंड में, जब टोटो ऑलमोस्ट अपने आप को जलाने वाला था. उस बहुत ही गर्म पानी था और वो उसके अंदर चला गया था. ही वॉज बॉइल्ड हिमसेल्फ. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. A large kitchen kettle had
kept on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head striking out from the open kettle. So what happened? जैसे राइटर ने बताया कि वो एक इंसिडेंट रिकलेक्ट कर रहा है जहाँ पे ऑलमोस्ट टोटो अपने आप को जलाने वाला था. तो वो जो इंसिडेंट था वो क्या था? जो लार्ज किचन केटल थी जो फायर पे रखी हुई थी टू बॉयल, उसमें पानी था, टी के लिए बॉयल हो रहा था. एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. तो उसने क्या डिसाइड किया? उसको नहाना था वार्म वाटर से. तो उसने क्या किया? जो केटल थी जिससे वो ढकी हुई थी उसको लिड बोलते हैं. तो जिससे वो ढकी हुई थी उसने उसको हटाया और फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन. और वो उसके अंदर चला गया क्योंकि उसको लगा कि वो इतना वार्म वाटर ठीक है उसके लिए ठंडियों में नहाने के लिए. विद हिज हेड स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम द ओपन लिड. उसका पूरा बॉडी थी वो अंदर थी केटल के और जिसका हेड था वो बाहर था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल. तो वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक था और जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट हुआ और ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हुआ, टोटो then raised himself a little, but finding it cool outside, he sat down again. तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा थोड़ी देर के लिए, बट क्योंकि बहुत ठंड थी बाहर वो वापस बैठ गया उसके अंदर. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him. Hauled him means pulled him out, half boiled out of the kettle. So what happened? वो तब तक उछलता रहा गर्म पानी की वजह से. वो तब तक उछलता रहा अप एंड डाउन जब तक ग्रैंड मदर आई और उसको रेस्क्यू किया. रेस्क्यू मतलब उसको बचाया, उसको बाहर निकाला उससे. ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स that in a large kettle, in this paragraph basically the writer is telling one incident about Toto. So in a large kettle water was boiling on the stove chulhe par. To climb up to the stove and remove the lid from it, he felt that the water was warm enough for him to take a bath. He entered the kettle with his head out of it. When the water started boiling, it became hot for Toto. He thought for coming out of the kettle, but as the temperature outside was cold for him, he stayed in it. Toto kept on jumping in the kettle for a while. It was when the writer's grandmother arrived that she took the half-boiled monkey out of the kettle. So he almost boiled himself. Okay, so let's come to the next paragraph. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts come near me, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. So the writer is saying that if there is a part in our brain that governs our ability to create mischief, then that part in Toto's brain was highly developed. So वो ये कह रहा है कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो हमें गवर्न करता है, जो हमें बोलता है कि और ज़्यादा मिस्चिफ करो, और ज़्यादा शैतानियाँ करो, तो वो पार्ट ब्रेन का टोटो के ब्रेन में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. वो इतनी शैतानियाँ करता है. एज ही हैड ग्रेट कैपेसिटी टू डू मिस्चिफ. शैतानियाँ करने के लिए उसके पास बहुत सारी कैपेसिटी है. ही वॉज ऑलवेज बिजी डूइंग मिस्चिफ. ही वॉज सो नॉटी. Whenever the writer's aunt passed him, he tried to tear their dresses. जब भी वो लोग आते थे राइटर की आंट, तो उनकी वो ड्रेस फाड़ने में लगा रहता था. Okay, so let's read the next paragraph. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her.
One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. He found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. So, what is the meaning of spite in this paragraph? Spite means a desire to hurt, annoy or offend someone. एक ऐसा desire, किसी को चोट पहुंचाने का desire, किसी को hurt पहुंचाने की इच्छा. And chattered means the sound made by the monkey is known as chatter. They chatter. Okay, so this paragraph means the writer recollects another incident about Toto. The incident was when Toto created a lot of mischief. At lunchtime, what was the incident? Let's see. At lunchtime, a dish of rice was placed on the dining table. जिसको बोलते हैं ना पुलाव, जो पुलाव डिश होती है राइस की, वो डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखी गई. When the family reached to eat, they found Toto eating it. The writer's grandmother screamed at Toto, and in response, तो उन्होंने जब वो लोग खाने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि टोटो उसको खा रहा है. तो जैसे ही जो ग्रैंड मदर है वो उस पर चिल्लाई. इन रिस्पॉन्स टोटो ने क्या किया? ही थ्रू अ प्लेट एट हर. उसके ऊपर उसने प्लेट गिरा दी. व्हेन द आंट्स ट्राइड टू कैच टोटो, ही थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. ही वाज सो मिस्चीवियस. व्हेन द ग्रैंडफादर अराइव्ड, Toto left the place through a window with the dish of rice along with him. So जब उसकी आंट ने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने क्या किया? उसने ग्लास ऑफ वाटर उसके फेस पे डाल दिया. जैसे ही ग्रैंडफादर आए उस प्लेस पर तो टोटो ने उस जगह को छोड़कर विंडो से निकल गया और विद द डिश ऑफ राइस along with him. टोटो रिमेन्ड आउट द एंटायर आफ्टरनून. वो पूरी दोपहर बाहर रहा घर के. He sat on a branch of the jackfruit tree, determined to eat all the rice. सारे राइस के दाने को खाने के लिए determined था और पूरे दोपहर वो jackfruit tree पे बैठा रहा with that dish. As the grandmother had screamed on him, he wanted to annoy her further. So क्योंकि grandmother ने उस पर चिल्लाया था इसलिए वो he want to annoy her. Annoy means he wants to irritate her more. So after eating the rice, he threw the dish and it broke into several pieces. तो उनको annoy करने के लिए उसने ट्री के ऊपर से जो डिश थी जिसके अंदर रखा हुआ था पुलाव वो फेंक दी और वो पूरी चकनाचूर हो गई. Okay. So the next paragraph, this is the last paragraph. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. So what happened? Finally, grandfather also realized that Toto was not suitable to be kept at home. कि वो suitable नहीं, उसकी mischiefs इतनी ज़्यादा है कि वो suitable ही नहीं है कि वो घर पे रहे. So he could not afford this frequent loss that he gave them. तो वो इतने जल्दी जो लॉस हो रहे हैं वो उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे. जैसे कि डिश टूट जाना, he tore the clothes, curtains, wallpapers, he broke the dishes. Okay, so the grandfather sold Toto back to the same Tonga driver for a sum of 3 rupees. So at loss he sold that the monkey Toto to the same Tonga driver. उसने कितने में ख़रीदा था? उसने 5 रुपये में ख़रीदा था और उसने कितने में बेच दिया? 3 रुपये में उसको बेचा. So at loss he sold that monkey again because grandfather everyone realized that he was not suitable to keep at home. So with this we come to the end with the explanation of this chapter.
So I want you to go through the chapter once, read the chapter twice, learn the word meanings and the difficult words of it. Thank you.